Hi Saurabh, how are you? Hi Sanjeev, and welcome to all of our viewers on Spirituality Made Simple, our weekly Sunday special where we go into more details of what we've talked during the week. I am Yay. Dr. Saurabh Bidani, and with me is my friend, life coach Sanjeev, and together we are here to make your life simple spiritually. So, Sanjeev, let's recap, I guess, on our weekly topic. I'll let you go For first. that, a very important point to highlight. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day. And the subject is breath. So Valentine में breath से ज़्यादा important क्या हो सकता है? So it's a most auspicious occasion for both of us to talk on breath and on the Valentine's Day. कहते हैं ना, Valentine एक दूसरे की जान होती है. चाहे कोई भी रिश्ते में हो, किसी भी रिश्ते में हो. और सांस से बड़ी कौन सी जान हो सकती है? मैंने कहीं सुना था जो अपनी सांस सांस से करे प्यार उसे मिले अपनी सास का बेशुमार प्यार। बहुत सारे लोग बोलेंगे छोड़ो भाई इनको प्रोग्राम से बाहर निकालो, सास के बारे में बोल रहे हो, अभी प्यार की बात कर रहे हैं, काम नहीं चलेगा. Yeah, so awesome. So that's great. So uh, let's review. तो आप review कर रहे थे, so let's review for the session and then Sure. yeah. You want to start with the review and then I'll Yes, go yes, next yes, after you. absolutely, absolutely. Yes. Uh, are you going like? Are you starting the review? Sure. So what we were talking about all this week was breath, breathing, सांस लेना. And we went through various different exercises to help you focus on your breathing and to show you how your breathing can help you mentally and physically to make your life so much better. Breath is just a word, but breath is from the beginning of life to the end of life. A soul enters the body when the child takes the first breath, and it leaves the body when the person takes the last breath. The energy of the universe is within the body only till the breath is there. And we have been told, and you've learned from various books from Shastras, that we all come with an X number of breath. That means each breath is extremely valuable. Each breath that you take must have an importance and purpose in life. Each breath that you take must teach you something. In fact, it does. You know that saying, you are the sum of five people that you hang around with? It's because you keep on taking in their breath, either physically or mentally, telepathically. You are doing that. So if that's happening, your company you keep is very important. But before that, the company you keep with your breath is even more important. So let's start very quickly with a small breathing exercise. And as we do, and as we say every single time we do an exercise, close your eyes and let the magic of the world slowly start encompassing your body. It's a shield or a layer of energy that is going to slowly surround itself around your body with you standing or sitting. And with each breath you take, it's going to get thicker and thicker, more solid to protect you from any kind of virus or disease. With each breath you take in, this shield will take the strength, and its strength will grow every time you breathe calmly and will diminish 10 times every time you get anxious. It grows one time when you take in calmly, and it diminishes 10 times when you get anxious. What is anxiety then?
Anxiety is nothing more than you breathing in a wrong manner. Take a deep breath, and with this knowledge and information that you just gained, open your eyes. And welcome, welcome, welcome. Whenever you're ready, Sanjeev, we can take the first question. That was powerful, and very importantly, the statement what you gave, doctor, that everybody comes on earth with specific number of breath. That's the fuel given for us in the life, and it's not about the age, it's the number of breath. So if Yes. we take our breath in a proper manner, we can enhance our vitality, we can enhance our age, or we can reduce the age if used it improperly. That's very powerful. Thank you very much, doctor. I think, Saurabh, that's a powerful thing. So, first question, would you take or should I ask for the question? Go ahead. So, first question comes from one of our viewers who had been watching us all throughout the week. They followed us and they have been following, I think, regularly with the question. It was a detailed question, so I could make out from there Mhm. that they have been following us regularly. And the question is, we all talk about breath. We all, in almost all the spirituality, whether it's Patanjali or anything, pranayama or yoga, they all are talking breath. But what's that specific thing to focus on when we are talking as breath and make it simple? Because everybody is talking hard way. That's the Mhm. question. Okay. So, taking breath simply means just breathe. Just breathe. The magic of breathing is that when you focus on breathing, it automatically readjusts itself to the most optimum level. Only when a focus is away from breathing does the body and the mind believe that it needs to breathe abnormally. So if your focus is always on your breathing, it will adjust itself. Yes, it's very hard. How can you focus on it in these tough times and tough days and running around and worrying about COVID? Just very simple. 1 hour, top of the hour, that means at 1:01, at 6:01, at 7:01, 8:01, just close your eyes and say, hey, breath, are you breathing okay? And just for like 10 breaths, in and out, just focus on it. Don't forcefully breathe, just take all your awareness there, your observation there. Observing, you can, easy things to do is also you can put your finger under your nose and Correct. allow it. You Absolutely. don't have to do anything. The body will do it. All you have to do कि अपना सारा ध्यान केंद्र अपनी सांस के ऊपर डाल दें. That's it. I appreciate. इतना ही सिंपल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. हाँ, when this specific question the person asked was trying to connect with Patanjali and other sort of thing, every every science used is leading to one single destiny. Hmm. There is no difference in any method. So no method is right or wrong. It's about what suits you the best. कहते हैं ना, मेरे लिए जो आसान है वो मेरे लिए अच्छा है, वो मेरे लिए काम करता है. जो मेरे Hmm. लिए आसान नहीं है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है. Hmm. And that's where I would say कि whether Patanjali or any other modality, even simple pranayam, when you do, you have to understand the fact that just not even about if I say और कुछ नहीं, सिंपल से काम करना है कि आपको अगर प्राणायाम में मजा आ रहा है आप प्राणायाम करो. आपको सिंपल ब्रीदिंग में मजा आ रहा है सिंपल ब्रीदिंग करो. आपको अपने सांस को ऑब्जर्व करने में मजा आ रहा है आप वो करो. और
connect to your breath. That's most important. That's the most important because all body vitality is dependent on breath. सांस है तो जान है, और जान है तो जहान है. Jahan. Absolutely. So, what do you think, doctor, can be the next question we can take? The next question is very similar. Actually, it's on the yogic practices where जो मुद्राएं बोलते हैं, तो क्या वो काम करती हैं? 100% काम करती हैं. उनको प्लीज इस्तेमाल कीजिए ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए. फोकस आपका मुद्राओं पे नहीं होना चाहिए, वो आपने एक बार सेट कर दी, उसके बाद फोकस आपका सांस पे है. पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, जब आप खुश होते हैं तो आप देखिए आपके हाथ कैसे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के हाथ खुले होते हैं, कुछ लोगों के बंद होते हैं जब वो खुश होते हैं. तो अगर आपकी खुशी आपकी मुट्ठियां बंद करके है और आप खुश हो रहे हैं, तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तब भी मुट्ठी बंद कीजिए और सांस लेते जाइए. और गुस्सा आ रहा है और गुस्सा शांत करना है, तो जब प्रैक्टिस कर रहे हैं और उस टाइम ऐसे रखी हुई और यूं गुस्सा आ रहा आता है आपको, आप ऐसे हाथ रख के गुस्सा करते हैं, तो यही प्रैक्टिस कीजिए और सांस पे ध्यान देके सांस को स्लो डाउन कीजिए. सो नथिंग इज राइट और रॉन्ग. There is a prescribed way of doing things, but that doesn't mean that's the perfect way, just like life coach Sanjeev just said. It's not that anything is right or wrong. It's that it will be customized to you, definitely. Just observe yourself. The whole idea about breathing is to be in observation of yourself. कि आप क्या कर रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या हो रहा है. अब जैसे let's take for example, you are you go into meditation and you're relaxed and जोर से हॉर्न बजता है. Observe your breath, how it changes like this. Yes, absolutely, absolutely. And Saurabh, just when you share this, a thought which pops up immediately. आपको ब्रीदिंग से एक फायदा और भी हो सकता है अगर आप फोकस ब्रीदिंग करते हैं. लेट अस Hmm. से कि किसी के बॉडी के किसी पार्ट में पेन है, आपने बोला ना 10 टाइम्स ब्रीदिंग. बस ब्रीदिंग करते हुए जो ब्रेथ को फोकस कर रहे हैं, उस ब्रेथ का डायरेक्शन उस बॉडी पार्ट पे ट्रांसमिट कर दीजिए, और देखिए शायद पेन, डिजीज, एनीथिंग दैट यू थिंक Hmm. vanishes automatically. I think that's just the immediate thought, and I think I have to use it, I have to practice it, and it works fantastically. That sounds like that Wow, sounds amazing. good. So good, lovely. So what's the next question, doctor? The next question is, how does breathing help with digestion of my food? How does breathing help with digestion of my food? Okay. Breathing is prana. Breathing is intake of two major things. One, oxygen, and second, ether. Hmm. Oxygen is used for digestive system to give energy to the body, which works for this physical body, and prana, ether, is used for the subtle bodies. Now, simple, if you can inhale or breathe completely with your full utilization of your lungs, Hmm. because it has been observed and the data says that most of us are not even utilizing approximately 30% of our lung capacity. Hmm. So इसका मतलब पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं जा रही है. Yep. पूरा ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब जो खाने को, खाने में से न्यूट्रिएंट निकालने के लिए जो ब्लड के थ्रू जो प्यूरिफाइड ब्लड जाता है, वो ब्लड टोटली प्यूरिफाइड नहीं जा रहा है. Hmm. देखिए सिस्टम क्या होता है, अगर जिसको कंफ्यूजन ना हो, लेट अस अंडरस्टैंड. रेस्पिरेटरी सिस्टम से आपने ऑक्सीजन लिया,
लंग्स में जाके हार्ट के थ्रू जो बॉडी से अनप्योर ब्लड आया लंग्स में वो प्यूरिफाई होते हैं और प्यूरिफाई होके वो फ्रेश ब्लड फ्रेश न्यूट्रिएंट के साथ पूरे बॉडी सिस्टम में जाता है और जाके जब वो डाइजेस्टिव सिस्टम से करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से जो खाना आता है उसमें से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करता है जो हमारे बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को चाहिए सप्लाई करने के लिए अंडरस्टैंड लाइक अ ट्रक सिस्टम इट्स अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम फैक्ट्री से हार्ट से फ्रेश ब्लड उठाया और डाइजेस्टिव सिस्टम से मिलके बाकी न्यूट्रिएंट्स ऐड करें और जिस ऑर्गन को जो सप्लाई करनी जिस स्टॉप में जो छोड़ना है वो छोड़ेगा सिंपल अगर आपका लंग 30% 20% कैपेसिटी पे यूज हो रहा है यानी कि आपके जो लंग्स में आके वो जो ब्लड जो अनप्योर ब्लड था जिसको प्यूरिफाई होना था वो उसको फुल ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो दैट मीन्स कार्बन कंटेंट्स अंदर रह जाएंगे कार्बन कंटेंट्स अंदर चलेगा तो वो ट्रक में जो दोबारा ब्लड लोड होके जा रहा है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में उसमें कार्बन कंटेंट जा रहा है और वो जो मिनरल्स ले रहा है खाने से डाइजेस्टिव सिस्टम से उसमें कार्बन और ऐड हो रहे हैं एंड आपके डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी पार्ट्स में आर्टरीज और वेन्स में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा so digestive system is directly correlated to your breath that's what I feel doctor what's your point of view I am completely with you on this, and now I'm going to just add on that we keep on forgetting that the digestive system not only digests food but also digests thoughts. It digests every single situation you are engaging with throughout the day. okay It also digests your dreams that you have in the night. It's a continuous process of anything you intake. So the sound you intake, it needs to be digested. If you can't digest it, then your ears can go deaf. The through your eyes, what you can see, if you can't digest that, your eyes will go weak. Through your touch and feel, if you can't digest what you're feeling, you will stop feeling. powerful powerful So while we see the digestive system, and just like Life Coach Sanjeev talked about it so well right now about food, it's a combination of all the five senses that takes in. And now I'll give it. It also requires excretion. Excretion is not just about food. It's also about your feelings, whatever you get in. Because how does the food make us feel decides if we will become fat or thin with the food. If it makes you feel guilty, you're going to put on weight. ah my favorite subject Right? So each of the intakes from the five senses is basically an intake of feeling and thoughts for the body. While the nutrients are helpful, we should not forget this. Now, this is not proven, there's no science to it, but there is a belief that if you just gaze at the sun for a few minutes every day as you get better at it, you actually need no more food. You don't need food from the earth to actually feed yourself and get better. Again, no proof of that yet. I've been looking for it. Whenever I get it, we will share it. But at this point, there's a possibility of that. Basically, what is food? It's the conversion of energy absolutely from one form to another to nourish the body. What is every intake of our five senses? Exactly the same. But the most important part is digestion only happens when excretion happens. That means you're sure your digestive system is working well. So when you are digesting food, you always need to focus back on our favorite topic, which is breath. Breathe slow, breathe relaxed, and everything will get digested no matter what. और ये सिर्फ सच्ची कहानियों पे नहीं है. जब आप पिक्चर देख रहे हैं और उसमें वायलेंस देख रहे हैं, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट हो रहा है, तो बहुत केयरफुली देखिए. अगर आप अनईजी होते हैं डेथ सीन्स को देख के, तो किसी को अलाउ मत कीजिए आपको फोर्स करें वो सीन्स पिक्चरों में देखने के लिए.
The simplest and the easiest way to digest food, digest thoughts is watching halke phulke light comedy shows. No horror, no action, no blood and gore. My suggestion. What do you think, Sanjeev sir? 2 points pops up immediately when you share. Yes. So one, uh, अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रेथ से कंट्रोल करना है, आप जब खाना खा रहे हैं और आपके ब्रेथ स्लो है, शैलो है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होने ही वाला है. और आप जब खाना खा रहे हैं उस समय आपके ब्रेथ बहुत फास्ट है, विगरस है, डीप, और ओके, एंड देन यू आर ईटिंग, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सपोर्ट कम करेगा. बिकॉज उस टाइम आपका जो प्रोसेस ऑफ ईटिंग होगा, च्यूइंग होगा, खाने का होगा, वो आपका अनसपोर्टिव सिस्टम से अंदर जाएगा. तो डॉक्टर, इफ आई आस्क यू, डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन कौन सा है? डाइजेस्टिव सिस्टम का पहला ऑर्गन? डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू ऑर्गन्स, एम आई राइट? सबसे पहला ऑर्गन क्या है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. डोंट नो, आप बताइए. डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला ऑर्गन है मुंह के अंदर गम्स एंड टीथ. ट्रू, यस, करेक्ट. व्हाई? बिकॉज जब तक आप इसमें से प्रॉपरली च्यू नहीं करोगे, तो कहते हैं कि जितना कष्ट आप दांतों को दे दोगे ना, आपके इंटेस्टाइन्स को उतना आराम मिलेगा. Very nicely put. दोनों खुश रहेंगे क्योंकि दांतों को यूनिवर्स ने बनाया है कष्टों के लिए. It has to move. और जितना आप इसको आराम दोगे, उतना इंटेस्टाइन्स को परेशान करोगे, उतना आप ओवरऑल हेल्थ के हिसाब से परेशान रहोगे. So now the question will be, but जूस पीने में तो दांतों को कष्ट नहीं होता. वाह, जूस पीने में दांतों को कष्ट नहीं होता. लेकिन आपने कभी ऑब्जर्व करा है, जूस पीते पीते कभी कभी जब आप अनकॉन्शियस होते हैं, आपको अचानक धसका उठता है. वो क्यों होता है? क्योंकि उस टाइम जो दो डिफरेंट चैनल्स ऑफ मूवमेंट है, एक एयर का, एक फूड का, वो एक दूसरे में कंबाइन करने की कोशिश करते हैं. सो व्हेन जूस ट्राइज टू एंटर इनटू द फ्लूइड, इनटू द एयर सिस्टम, एयर पाइप, जो अगर हम बड़ा सिंपल लैंग्वेज में बात करें, वहां पर आप देखिए कैसे होगा. एंड दिस विल अगेन हैपन अगर आप अगेन अपने मुंह पे जब आप खा रहे हो उस पर फोकस नहीं होते हो, तो आपको धंसका चढ़ जाता है. Exactly. It's very important for everybody to focus. And I'll add teeth, tongues, and the bridge, the top of the mouth, is also places where digestion happens. So if you chew properly, तो जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ जरूरत है ना, यहाँ यहाँ यहाँ, वो थोड़ा जल्दी पहुंच जाते हैं. इंस्टेड ऑफ नीचे जाएं, फिर वो उस पर डिजोल्व हो, फिर ऊपर आए, यहीं से थोड़ा काम हो जाता है. तो अगर आप खाए पिए धीरे धीरे, नॉट, एंड very important point like what Sanjeev brought up, chew slowly, enjoy the food you're eating, drink slowly, enjoy the water you're drinking, so that the body also gets its process time. ऐसे ठूस ठूस के खाओगे तो ऐसा जैसे वो मशीन में आपने सब कुछ ठूस दिया, भैया कुछ बन के आ जा, नहीं बनेगा, फट जाएगी मशीन. धीरे धीरे, हौले हौले, one step at a time, chew completely and properly, just like your parents told you, and then allow the food to follow. How is it connected to breath though? It's connected to breath because this breath then allows the body to be regulated, slows it down. If you eat fast, the mind is thinking, भाई इसको तो कहीं जल्दी भागना है, इसको तो कोई पकड़ने वाला है, तो ब्रेथ ज्यादा तेज हो जाएगी. और हमने शुरू में क्या बोला, हम आते हैं नंबर ऑफ ब्रेथ से. तो भैया ज्यादा जीना है तो ब्रीदिंग थोड़ी स्लो करनी पड़ेगी, उसके लिए खाना स्लो करना पड़ेगा, उसके लिए पीना स्लो करना पड़ेगा, सब कुछ
धीरे धीरे स्लो मोशन में इंजॉय करते हुए, बिकॉज हम आए किस लिए हैं? हम आए किस लिए? स्ट्रेस करने के लिए कि भैया लाइफ में स्ट्रेस रहे और बस परेशान और टेंशन है, या आप यहाँ क्यों आते हैं? स्ट्रेस लेने के लिए नहीं, आपको तो क्या चाहिए? सौरभ, ब्लिस, मोक्ष। आप कैसी बातें कर रहे हो? स्ट्रेस नहीं होगा तो लाइफ में मजा कहाँ होएगा? I appreciate totally. I think this was a lovely question, and this brought up a lot of new thoughts all of a sudden. With this, any specific question, or we are towards the end of our time today? Yes, Any we other are. questions we have? I think we are towards the end of our time now, so let's quickly wrap up and let's talk about our new week coming up. So we are breathing out our topic of this week, which is breath, and we are waiting to breathe in the next topic, which will come up tomorrow. And like we say every week, we do not think of our topics. The universe channels through us whatever it feels is required for all of you. Absolutely. Each one watching, whatever you require comes up. And it just magically helps people. We've been seeing it now. I think we've been doing it for 3 months now. मुझे पता ही नहीं चला टाइम कैसे निकल गया, कितना टाइम से हम करे जा रहे हैं. Awesome. मतलब पता नहीं चला regular, and interestingly we were very much consistent. Yeah. तो मजा ही आ गया. Absolutely. So now we've been doing it for 3 months now. So if you missed any of them, join us tomorrow and day after and the weekday after that, day after that, and stop missing. Be a part of the change in your life through Spirituality Made Simple with me, Dr. Saurabh Bidani, and my friend Life Coach Sanjeev. So we shall see you tomorrow on Instagram at doc.sp and then Life Coach Sanjeev on Tuesday. And that's how we work. So Monday, Wednesday, Friday is doc.sp and Tuesday, Thursday, and Saturday is Life Coach Sanjeev. And on Sunday, right here. Zoom on live YouTube. Thank Perfect. you. Till then, see you. Thank you, Sanjeev. फिर मिलते हैं. We'll meet soon.